So as we have already seen basic object oriented programming concepts in previous sessions. So what is the object oriented programming approach? Every object oriented program have these members, like data member means variable like this. If we assume program for rectangle, calculating area of rectangle, very simple program which needs length and breadth as input, it will provide area and perimeter as output. So to store these values, we require these variables. Similarly, functions, that is member methods. So every program or every object oriented program, if you see as like data members, it will be having member methods like functions actually. तो आप इनपुट लोगे वैल्यूज का, you will calculate area, you will calculate perimeter, you will display final answer. So these are the different tasks or functions need to be performed. So in all, your class named rectangle will be having these data members and will be having these member methods or functions. This constitutes your whole class. And in order to refer these members of a class, you need to define object of a class. So object का एकदम simple काम ये है to allocate memory. You can access all these members with the help of creating the object. So we have seen a simple code, demonstrative code to understand this concept. So if you see in C++ programming OOP part, class rectangle, so we have declared some desired variables, length, breadth, which we are going to take input from the user, area and perimeter, which we are going to calculate and display to the user as a result. So what do we call them as data members? So simply variables are referred as data members. You have functions to perform. So you are simply doing what? You are just splitting the task, splitting the code in different small modules, you can say here. So input separate code create किया आपने, जहाँ पे आप input ले रहे हैं. Like enter the length and breadth, see in length, breadth. Void calculate area function, you have named that as cal underscore area. It is up to you what the name you will keep. Nothing hard and fast, but that should be indicative name, so that just simply reading the code you should get the idea कि ये particular function का काम क्या है. Then area, length into breadth, that is the simple logic. Similarly, cal peri or calculate perimeter, same funda, perimeter equal to into length plus breadth. Void display see out area का value, see out perimeter का value, perimeter. So knowing basic C++ programming in prior, we can implement this same program with the help of OOP. So this is what the class definition looks like. Class rectangle और ये पूरा class rectangle का definition है, जिसमें ये data members हो गए और ये member methods हो गया, मतलब ये क्या functions हो गया. The point here is how to use this. So you could see void main. Now first we are actually creating object of the class. Class name of the class rectangle and R is just an object. So it is just like data type and variable. You can say object is actually variable of type class. And simply as per sequence, so definitely you will first take input. So R dot input. Then you will calculate area. You will calculate perimeter. So these can be shuffled, these two. Then R dot display, that has to be at last. So all these are function calls, but we are actually accessing the functions of respective class with the help of object of a class. So what is going to happen when you call this in this sequence, call the functions in this sequence? So first of all, whenever you create the object at this particular step, all this initialization occur. That means now the object is created in the memory, length, breadth, area, perimeter as integer are declared, and they might get some particular memory location with this identification, length, breadth, area and perimeter. And then R dot input
will take you to this particular step, this particular function. Within it, this is the code. Cout enter length and breadth. That means simply the display will say enter length and breadth, and user will enter the length and breadth ka values, which will respectively get stored in variables length, breadth, which were declared already when object was created. Similarly, when you call calculate area, this function will be triggered. Now length and breadth ka value already we have taken input from the user. So this will be calculated and area ka value will get stored. Similarly for this. And finally, area and perimeter has got their respective values after calculation. So void display cout area equal to area value will get displayed. Perimeter value get displayed. So that's why I said here you can write it in any sequence. That doesn't matter. Instead of writing this at first, you may write this at last. That is no issue. There is no issue in that while defining, but it matters while calling. So definitely you need to call input first so that you will get the value initialized. Then these two can be shuffled. Then this has to be at the last call, and your function will be, your program will be over. Got it? That's it. Yes, So sir. this was just a small re-walk through from the object oriented concept, because now we are going to discuss next is important topic related to object oriented programming, and that is constructors and destructors. So very first thing, let's keep aside this destructor part, because once you get this, ये अपने आप क्लियर हो जाएगा. कंस्ट्रक्टर्स क्या होता है? तो वेरी first step you do in your program is what? You actually initialize the values to the respective variable. So for that matter, you had this input function. The object is created and length breadth declare हो चुका है, बट उसके जो वैल्यूज है वो इनपुट से मिलेंगे, मतलब जब इनपुट यूजर देगा. तो बेसिकली ये इनपुट फंक्शन आपको कंपलसरी पहले कॉल करना पड़ा. तो ये स्टेप हमेशा आपके प्रोग्राम में रहेगा ही रहेगा, बीट एनी प्रोग्राम. लॉजिक विल डिफरेंट. सो इफ यू सी दिस सिंपल इंटरेस्ट वाला प्रोग्राम, here also you need the input function. I mean, name of the function might be anything, but you need to take input of the values. So ये particular task, ये particular step is always going to be there. So what if we find any shortcut for this? So you can say this particular shortcut to taking input, to initializing the values to the variable, is actually the constructors. So definition wise, what is a constructor? A constructor is a spatial member function. देखो, मेंबर फंक्शन लेकिन स्पेशल है. स्पेशल मेंबर फंक्शन फॉर ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन of an object. Automatic forget about everything.
फंक्शन कैसे रहता है ये आपको पता है। फंक्शन ऐसे कुछ दिखता है, उसको रिटर्न टाइप होता है, उसको कुछ ना कुछ नाम रहेगा। इट डिपेंड्स, ये रहेगा पैरामीटर्स या फिर नहीं रहेगा। एंड देन curly braces and inside that you will have a code of it. अगर वो स्पेशल मेंबर फंक्शन है मतलब वो फंक्शन जैसे ही दिखने चाहिए कंस्ट्रक्टर्स। So simply there are certain rules to be followed while designing or defining a constructors. Very first thing, constructor have same name as that of a क्लास। आपको अलग नाम देने की जरूरत नहीं है कंस्ट्रक्टर को, जो क्लास का नाम है वही आपको कंस्ट्रक्टर को देना रहता है, रूल है। फंक्शन को एक्चुअली रिटर्न टाइप रहता है ना, जैसे कि यहाँ पे वॉइड है, ये रिटर्न टाइप है, इट वोंट रिटर्न एनीथिंग। इंट रहता तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता था, फ्लोट रहता तो फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता था। बट अगर आप कंस्ट्रक्टर डिजाइन कर रहे हो ना, इट हैज नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड, वॉइड भी नहीं है क्या। कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड, इन्वोक मतलब कॉल, काइंड ऑफ कॉल, ऑटोमेटिकली इन्वोक when object of a class is created. And the last important point to add is उसके टाइप्स है। तो एक है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सिंपली डिफॉल्ट मतलब क्या, इट वोंट हैव एनी पैरामीटर। हाउ यू कैन आइडेंटिफाई डिफॉल्ट, नो पैरामीटर, ब्रैकेट एम्प्टी। दूसरा है पैरामीटराइज्ड, मतलब डेफिनेटली हैव पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स, वी आर गोइंग टू सी दिस। एंड तीसरा होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। दैट मीन्स उसको पैरामीटर तो रहता ही है, बट वो पैरामीटर वेरिएबल नहीं रहता, मतलब जो इंटरनल क्लास के है ऑब्जेक्ट ही एज अ पैरामीटर पास करते हैं। सो need not to think much about this now, whenever I teach you will come to know. So basically कंस्ट्रक्टर्स के रूल्स है और ये टाइप्स है, वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन। इट्स एक्चुअली वेरी इजी बट यू नीड टू जस्ट फॉलो द रूल्स, दैट्स इट। So as we have already seen the rectangle wala class, we are going to implement same program, but this time we will use constructor. Question would be right, object oriented program to calculate area and perimeter of rectangle. Use constructors. Also use a function
declared outside of a class. So basically in a single code, we will handle all things which we have learned. Let us try this code. Hash include class rectangle. Let us declare the required variables. So this remains same, private int. Now I'll be writing short name L B A P. L for length, B for breadth, A for area, P for perimeter. Keep in mind that we are not going to use input function because we are going to use constructor. When we don't need that function specifically, तो input का काम तो हो जाएगा. डिस्प्ले करना है तो वो फंक्शन में लिख लेता हूँ void display. What would be the code of display? Cout area equal to A. A cout perimeter equal to P. That's it. Also, we need calculate function, but as I said, one of the function I am declaring outside. So we just need to declare that void calculate. Now constructor. What's supposed to be the name of the constructor? Constructor का नाम क्या होना चाहिए? Same as that of a class. So basically, we have to declare name of the constructor. Of course, rectangle. Bracket empty है. So ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहेगा. बट कंस्ट्रक्टर का एनी हाउ काम क्या है? वैल्यू इनपुट करना, इनपुट लेना. अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, L इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 5. तो इनपुट भी हम डायरेक्टली असाइन कर रहे हैं, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यूज. L इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 5. अब और एक तरीके से हम इसको कर सकते हैं. रेक्टेंगल int x int y. L इज इक्वल टू x, B इज इक्वल टू y. कुछ क्लिक हो रहा है? ये पैरामीटर्स पास कर रहे हैं हम लोग. तो ये दिखने को फंक्शन जैसा ही है, उसका नाम सेम एज दैट ऑफ अ क्लास है, बट रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, वॉइड भी नहीं है. दोनों भी क्या है? कंस्ट्रक्टर्स है. बट इसको कुछ पैरामीटर पास नहीं किया, तो ये कौन सा हो गया टाइप? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नो पैरामीटर. और इसको पैरामीटर पास किया, तो ये कौन सा हो गया टाइप? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. ये क्लास का डिफिनेशन में यहाँ पे क्लोज करता हूँ. और हम लोग ये कैलकुलेट फंक्शन जो है, जो क्लास के बाहर डिफाइन करना पड़ेगा, वो डिफाइन कर लेते हैं. सो
here. What is the return type of function? Void. What is name of the class? Rectangle. Scope operator. What is name of the function? Calculate. So what's supposed to be the logic? Simple. A is equal to L into B. P is equal to 2 into L plus B. So this is the function declared outside the class definition. तो class definition ये है, ये और ये इसके बीच में पूरा class definition है. ये function declared outside है और उसको declare यहाँ पे किया, define बाहर किया है. Now we are going to use this class. Void main. And we need to declare object, create object of a class. Class rectangle R1. अब देखो, whenever you do simply like this, class rectangle R1, object create हो गया. अब जब object create हो गया, so whenever object of a class is created, automatically constructors are invoked. Constructor is invoked basically. यहाँ पे एक ही है. तो अभी इन दोनों में से कौन सा इन्वोक होगा, मतलब दोनों में से किसको कॉल जाएगा? तो एज यू कैन सी, इसको कुछ पैरामीटर है क्या? देयर इज नो पैरामीटर टू इट. अगर पैरामीटर नहीं है तो वो कॉल देगा किसको? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को. मतलब अपने आप इसको कॉल जाएगा. तो लेंथ का वैल्यू अपने आप क्या असाइन होगा? 10. बी का वैल्यू 5 असाइन होगा. आई मीन वैसा कोड रखा है. फिर आप जब R1 डॉट कैलकुलेट को कॉल करोगे तो अभी R1 के लिए L का वैल्यू क्या हो चुका है? 10. एंड B का वैल्यू क्या हो चुका है? 5. तो अगर मैं पिक्टोरियली आपको यहाँ पे दिखाऊं तो सपोज R1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. R1 के दो कंपोनेंट है, L, चार कंपोनेंट है, L, B, A, P, क्योंकि डिक्लेरेशन के टाइम पे ये चार हम लोगों ने किया है. उसमें से R1 का L और B क्या हो गया? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है 10 और 5. तो R1 के L में सपोज वैल्यू गया 10, B में वैल्यू गया 5. जब हम लोग R1 डॉट कैलकुलेट करेंगे तो L और B का वैल्यू फॉर R1 वो लेके यहाँ पे कॉल जाएगा. तो L इंटू बी मतलब 10 इंटू 5 50, 2 इंटू L प्लस बी 15 इंटू 30. तो मतलब A का वैल्यू हो जाएगा 50, दिस विल बी 30. तो ये R1 ऑब्जेक्ट के लिए हो गया. दिस इज जस्ट फॉर योर विजुअल रिप्रेजेंटेशन आई एम डूइंग दिस. तो R1 डॉट कैलकुलेट एंड देन R1 डॉट डिस्प्ले, you will have these things in the memory. तो यहाँ पे डिस्प्ले करोगे तो एरिया इज इक्वल टू 50 दिखेगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 दिखेगा. नाउ if I do like this, instead of this, sorry, now instead of this, if I declare rectangle R2 5,2, what does this indicate? ये किसको कॉल जाएगा?
ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम ऑब्जेक्ट के साथ आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं हम लोगों ने, पैरामीटर्स रखे हैं। तो phi will be stored in x, 2 will be stored in y. That means ultimately phi will get stored, x will get stored in L, y will get stored in B, matlab phi and 2 will get stored in L and B. Remaining things will be same. So now if I do R2 dot calculate, it will be phi into 2 and phi plus 2 into 2. So R2 dot calculate, R2 dot display. So what will be R2 object look like in the memory? R2 के पास भी जैसे ही R2 डिक्लेयर होगा ये, तो उसके पास भी ये डिक्लेरेशन की बात LBAP के लिए मेमोरी क्रिएट हो जाएगा। बट हम लोग 5 और 2 पास कर रहे हैं, तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया। 5 into 2 10, 5 plus 2 7 into 2 14. So perimeter will be this. So when you call display, area will be 10, perimeter will be 14. So what we have achieved basically, we have simply reduced the task of taking or writing separate input function. You can say that, because some things are happening on its own, or some things are handled in a way that they will occur on its own. But only thing, we need to follow those rules, syntax. So is the constructor part is clear? So now you can see, relate with this, have same name as that of a class, no return type, not even void, automatically invoked when object of a class is created, types are default, no parameter, parameterized, have parameter, copy constructor, object as a parameter, which we are yet to discuss. So with the help of this example, is this concept of constructor clear to you guys? Yes? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great.